all to my YouTube channel Anjanas Education. Today we are going to discuss one of the short story after 20 years of first year plus 2 art science and commerce students after 20 years, which is written by O Henry. After 20 years it means, as we know, that 20 ବର୍ଷ ପରେ. So what is the suspense here? Let me introduce the writer, which is the name of the person who is very famous, William Sidney Porter, born in the year 1862 and died in the year 1910. 1862 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1910 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନାଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ୱିଲିୟମ୍ ସିଡ୍ନି ପୋର୍ଟର, ନୋନ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ପେନ୍ ନେମ୍ ଓ ହେନରୀ, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ବେଟର ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଓ ହେନରୀ। ତାଙ୍କର ପେନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଓ ହେନରୀ, who was an American writer. He was an American writer, and why he was famous? Actually, he was famous as a short story writer, and he is also known for his wit, his wordplay, and warm characterization and surprise. And most of his writings are based upon surprise and suspense. And here this story, actually, if you go to discuss the story, I am jodi alochona kariba e bishore, we will come to know that how a duty comes between two friends, how the trust comes between two friends, and how they both are devoted to their duty, and how their personal relationship affects, that we are going to discuss. And also in this chapter or in this unit, we will also come to know how a personal relationship turn, a unique story of the writer O Henry. ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମେ, and it is full of suspense and surprise. How? Let me introduce the first unit. The policeman on the beat moved off the quiet road smartly. His smartness was the habitual and not for show. For spectators were few. The time was only 10 o'clock at night, but the locality was one that kept early hours, and chilly winds and a drizzle had almost depeopled the street. So the meaning of beat is it was a regular check and patrolling by the policeman. I am going to reveal the character of policeman. Actually, who is that policeman here? He is Jimmy Wells, who was a police officer. I have not gone through the character. I am not going to tell about it. Actually, when time comes, I will tell you in detail what kind of role he is playing here in this story. ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, policeman କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବା, and how he became a policeman, that also I would like to discuss in the next. So here the policeman on the beat moved up the quiet road smartly. The road was quiet and peace, full of peace. ରୋଡ଼ଟି ଶାନ୍ତ ଥିଲା. The setting of the story I am telling you, କୋଉଠି ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି. The policeman on the beat moved up the quiet road smartly. Actually, he was doing his duty, and it was a regular checking, and he was patrolling on that day, and the road was quiet. Road ti shanto thila, janasunnya dekha jautla. His smartness was habitual, and through his training he came to know that how to do his duty, and he used to do that properly as a policeman, how it should be done, କିଭଳି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ policemanର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ. He was performing his duty sincerely, and he was checking everything, whatever it came towards him, ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା or କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା, and it was a regular check, not for show, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନୁହଁ. It was his duty. For spectators were few. ଲୋକ ବା ପରିଦର୍ଶକ ଅତି ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ସେଠି. The time was only 10 o'clock at night. ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ସମୟ ହେଉଛି 10ଟା, but the locality was one that kept early hours, and chilly winds and a drizzle had almost depeopled the street. The street was looking quiet, ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା. There was no one, କେହି ବି ଲୋକ ନଥିଲେ. କାହିଁକି? Due to the chilly winds, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ drizzle କହିଲେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ in that street. And at there the person or the policeman was performing his duty with his companions and assistants. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲା, and he was checking everyone on that day. So we are moving to the next paragraph, examining closed doors as he went, making various interesting and playful movements. So it is mentioned here the activities of a policeman, how he used to check and how he was checking on that day. ସେ କିଭଳି ଚେକ୍ କରୁଥିଲା, and how was he doing his duty, ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେ କିଭଳି କରୁଥିଲା sincerely, that is mentioned here. ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି. Examining closed doors, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା. He went to that place, making various interesting and playful movements, and he was performing some of the activities
if anyone was suspicious he used to go there and he used to check that जोटी ताको संदेह लागुतला तार with the help of that small stick धरिथिबा से stick माध्यम से समस्त को check कर so the officer with its stalwart figure and smart movements made a fine picture of the guardian of the law. So the posture of the person or that policeman was indicating through his activities that he was a perfect policeman and he was the guardian of the law and आम जोटा कहूँ न्यायर रक्षक कहूँ किए बा न्यायर रक्षक कहूँ से पुलिसमैन एंड ही वाज द परफेक्ट ही हाड द परफेक्ट फिगर पुलिसमैन गोटे परफेक्ट फिगर थिला तांको पाखरे से पुलिसमैन पाखरे एंड थ्रू हिज एक्टिविटीज ही यूज टू शो अदर्स दैट ही और दैट डिपार्टमेंट वाज द गार्डियन ऑफ द लॉ से थिला गोटे परफेक्ट प्रतिमूर्ति से पुलिसमैन एज अ गार्डियन ऑफ द लॉ न्यायर रक्षक बोलिक गोटे कह जोटा तार गोटे रक्षक भाव में तार गोटे परफेक्ट पिक्चर इट वाज क्रिएटेड बाय द राइटर हियर थ्रू हिज स्टोरी. नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट लाइन. He could see a few lights coming from a cigarette store. So se kon dikhla at that time he noticed something and what was that? Few lights were coming from a cigarette store. What cigarette store ru kichi sound asutila ba light asutila that he noticed at that time and he was going to notice and he came to notice about that. Se dekhila se गोटे सिगरेट स्टोर रू आसूला किसी लाइट एन ऑल नाइट होटेल इट वाज एन ऑल नाइट होटेल राति खोला जाउथवा गोटे होटेल थिला ये एंड वन और टू टेलरिंग शॉप्स कंप्लीटिंग देयर डेज वर्क एंड व्हाट मोर ही सॉ ऑन दैट नाइट से देखिला जे वन और टू टेलरिंग शॉप्स कंप्लीटिंग देयर डेज वर्क द ओनर ऑफ द टेलरिंग शॉप्स वे आर कंप्लीटिंग देयर डेज वर्क दिनर कामटी से समाप्त करछन्ती एंड द स्टोर्स एंड द शॉप्स वेर नॉट क्लोज्ड at that time से बंद हो नथिला and on the other hand what he saw in the previous sentence I told you पूर्व sentence रे मु कहली that the policeman saw something that कोन जे few lights were coming from a cigar store which was situated near an all night hotel रात्रि रे खोला रहतुआ गोटे होटल पाखो सिगरेट स्टोर रू किछि लाइट देखिबा को पाइले सी and it was suspicious देखिले गोटे संदेह चक्षु रे. In the next sentence, the majority of the houses were business places that had long since been closed. बहुत समय हेलाणी विभिन्न बिजनेस दुकान गुड़ी को जो शॉप गुड़ाक बंद हो जाता. Now and then he would suddenly turn about and cast his watchful eye along the peaceful road. And he forgot everything and suddenly he turned about and cast his watchful eye along the peaceful road. And he started watching the peaceful road which was before him. जोटा तार सामने थिला से संतपूर्ण रोड को से देखा को लागिला कहीं समथिंग इट मेड हिम सस्पिशियस एंड दैट इज वाई ही वाज इन डाउट संदेह थिला से से पुलिसमैन टी देखा को लगिले कुआड़े रोड आड़े. ही वाज थिंकिंग ऑफ व्हाट हिज बॉस हैड सेड इन द मॉर्निंग देन ही रिमाइंडेड एंड ही स्टार्टेड रिमाइंडिंग समथिंग व्हिच वाज टोल्ड बाय वन ऑफ हिज बॉस इन द मॉर्निंग किसी जिनस कही बोस तांको से विषय से मन पकेबा लगे किए द पुलिसमैन हु वाज ऑन ड्यूटी ऑन दैट नाइट जे ड्यूटी थे पेट्रोलिंग ड्यूटी से दिन राति एंड व्हाट दैट बोस हैड सेड टू द पुलिसमैन तार बोस अथॉरिटी कौन कही पेल फेस स्क्वायर जॉज डीप एंड डार्क आईज एंड अ लिटिल व्हाइट स्केयर वी कैन राइट फ्यू मीनिंग्स हियर. पेल फेस बोली कहले कला लोक मैंने यूरोपर गोरा लोक मान गोटे प्रकार आखिया दैट इज नोन एज पेल फेस. द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वायर जॉज बोले माने चतुर्भुज भाया थिबा गोटे पार्टीर आकार चारि कोणिया गोटे पार्टीर आकार से भाया टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन एक्चुअली इट इज द पोस्चर ऑफ दैट क्रिमिनल टू whom the whole department was searching from a long time. They had been searching for a criminal and they had a special message on that criminal to catch him. ताकू धरिया पाई गोटे स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट होइतिला एंड द पर्सन पुलिस हैड अ मैसेज ता पाखर गोटे मैसेज थिला कि भलिया मैसेज दैट द बॉस हैड सेड अर्लियरली इन द मॉर्निंग सकाळ रे किछि से बोस तांकर पुलिस को किछि कहिथिले जे केमति से लोकटी को चिनिबो द पोस्चर ऑफ दैट पर्सन मीन्स से क्रिमिनल रो फेस टी पेल फेस माने बहुत गोरा फेस थिबो स्क्वायर जज चारि कोणिया पार्टी थिबो डीप एंड डार्क आईज
to recognize that person and a little white scare near the right eyebrow पाखरे किछि क्षत रही किछि आघात पाइछि सेठी आघात अछि माने it was in detail mentioned by the boss to the police मेन से पुलिस ऑफिसर को तार बोस तांको कहिथिले जे गोटे लोकर विषय रे जे देखा जाउतला एभली भाबरे एंड व्हाई ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट ए पर्सन एभली लोक संस्पर्श विषय से काहे कहले बिकॉज ही वाज ए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन चिकागो ऑफ अमेरिका रो चिकागो सहर रो गोटे माने आमे कहबा गोटे दुर्दांत अपराधी थिला सी एंड तार पोस्टर टी किभली थिला दैट इज मेंशनड बाय द बोस to the policeman who was on duty on that day जे से ड्यूटी थिला से दिन से कथा कहैछि सो नेक्स्ट टाइम आसीबा एंड तार आईब्रो पाखरे किछि क्षत रहिछि एज ए पार्ट ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ही फेल्ट अ लिटिल ashamed that the name of this notorious criminal was still unknown but one demerit they had तांको पाखरे गुटे असुविधा थिला कोन they didn't know the name of that most wanted criminal who was in most wanted लिस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रो मोस्ट वांटेड लिस्ट थिबा क्रिमिनल रो नाटी से मन जानि नथिले जोथि पई ही फेल्ट अ लिटिल एसम टिके लज्जा अनुभव करथुले फॉर हिज डिपार्टमेंट एंड द नेम वाज स्टिल अननोन टू द डिपार्टमेंट तांकर नाटी जानि नथला बट इट वाज हिज ड्यूटी टू कैच द क्रिमिनल बिकॉज ही माइट कम ऑन दैट डे से दिन से आसी पारे सेति पई से मेसेज थिला दैट इज व्हाई द होल डिपार्टमेंट वाज देयर ऑन ड्यूटी to catch that criminal. It was a special operation and we are moving the next line and that he was still at large printing counterfeit notes. Counterfeit will call it illegal duplicate notes जोटा हमें कहूचे printing counterfeit notes was a serious affair and the activities of that criminal indicates तार अपराध कथा कहैछि एठी so what kind of criminal he was actually he used to print counterfeit notes इलेगाली नोट प्रिंट करथला डुप्लिकेट प्रिंट करथला नोट के से क्रिमिनल जाको पुलिस डिपार्टमेंट सर्च करछि आउ से पुलिसमैन से पर्टिकुलर पुलिसमैन आई एम गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ दैट पुलिसमैन एक्चुअली अदरवाइज इट विल बी टू डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर मान को बुझिया को कष्ट हो मु तांको विषय सेथि पई कहि देउछि दैट द पुलिसमैन वाज जिमी तांको ना थिला जिम द पुलिसमैन द नेम ऑफ दैट पुलिसमैन वाज जिमी सो हियर से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रो मुख्य अपराध कौन थिला से इलेगल नोट प्रिंट करथुला ही न्यू दैट द क्रिमिनल मस्ट बी कट से जानी थिला क्रिमिनलटी अवश्य धरा पड़िबो ही टुक आउट हिज पॉकेट बुक तांकर नोटबुक पॉकेट रू काढिले अंडर ही वेंट टू द लैंप पोस्ट ऑफ द रोड एंड ही टुक आउट हिज पॉकेट बुक तांकर नोटबुक टी काढिले पॉकेट रू to write something actually and looked at the $5 note and what he saw and noticed से कौन देखिले the $5 note and the reconstructed photograph से photograph reconstructed केमती हेची सेठी केमती print हेची that he saw से जमर से देखिले he became thoughtful and he started imagining something and he was in thoughtful mood के the policeman वर्तमान चिंता रे थिले and Chicago 1,000 miles away what a chance 1,000 miles दूर एटा गोटे बहुत बढ़िया चांस देन ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड जोर से निजे कहवा को लागिले व्हेन ही वाज इन थॉटफुल मूड ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिमसेल्फ से निजे कथा हेबा स्टार्ट करूथले सो के द पुलिसमैन जिमी निजे कथा हेबा स्टार्ट करथिला नेवर माइंड माय बॉय ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिमसेल्फ से निजे कहवा को लागिले नेवर माइंड माय बॉय डोंट गेट वरीड चिंता करो नहीं विरक्त हो नहीं बा आमे कहवा टेंशन हो नहीं माय बॉय यू हैव बीन अ ड्यूटीफुल वन दिस लास्ट 18 years you have performed and you have been performing as a dutiful employee for the last 18 years पाखा पाखी 18 वर्ष होला तू तोर ड्यूटी भलो भाबरे करि पारुछु बा करि आसुछु सो you must be sure and confirm that luck aways you a debt तोर luck तोते साथ देबो and the fortune will support you and you will be able to catch that criminal today तुम्हें आज से क्रिमिनल को धरी पारिबो and there is no doubt that is what it came into his mind कार पुलिसमैन रो मुंड रे बा तार ब्रेन रे एभली चिंताधारा आसुतला whether he will be able to catch that criminal or not एटा थिला गोटे परफेक्ट opportunity on the part of that policeman to catch the criminal and now he thought something about his luck and fortune तार भाग्य विषय भाबुतला and what he thought जे निश्चित मोर भाग्य मते सपोर्ट करिवो टू कैच दैट क्रिमिनल एंड आई वोंट बी बैक
मु आउ पछकु फेरबी नाही एंड आई विल बी एबल टू कैच दैट क्रिमिनल मु से क्रिमिनल टाको धरिबा को सक्षम हेबी. ही वाज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड इट वाज हिज हैबिचुअल ड्यूटी एंड ही यूज्ड टू टॉक टू हिमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम. प्राय पाखापाखि से बहुत समय से निजको निज कथा होतला व्हेन ही गॉट टेंस्ड जेतेबेले से धैर्यहरा हो पड़ते पुलिसमैन से निजे कथा लगुले टू बी रिलैक्स हाँपाई. सो व्हाट हैपेंड व्हेन नोबडी वाज बाय एंड ही लाइक टू रिफर हिमसेल्फ एज ए बॉय एंड व्हेन नोबडी पासेस बाय और व्हेन नोबडी वाज बाय तांको पाखरे जेतेबेले केही नथिले ही थॉट हिमसेल्फ एज ए बॉय. से निजको गोटे बॉय बोली छोट बालक बोली भाबुतले एंड ही was forgetting that he was 40 years old. भूली जाउतले जे से 40 वर्ष बयसर गोटे युवक बा गोटे 40 वर्ष बयसर गोटे लोक हो जाइतले से. सो वी आर विथ द नेक्स्ट लाइन. देयर वाज अनदर थिंग इन हिज माइंड. ही लुक्ड एट हिज वॉच a 10:15. that means as I told you before that it was 10 o'clock at night but it has already been 15 minutes past. वर्तमान 15 मिनट पास हो जाइतला एंड इट वाज 10:15. 15 मिनट्स मोर 10:15 बाद जाइतला एंड आई टोल्ड यू ही लुक्ड एट वॉच एंड देन इट वाज ए लॉन्ग रोड. बहुत लंबा रास्ता थिला बट देयर वाज एनफ टाइम यथेष्ट टाइम थिला टू कैच दैट क्रिमिनल. सो इट वाज ए स्पेशल ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द पुलिसमैन जिमी द्वारा करा जाता है गोटे ऑपरेशन एंड ही वाज सेड बाय हिज बॉस. तांकर बॉस तांको कहिथिले दैट अ क्रिमिनल वाज अबाउट टू कम on that night and it was the perfect opportunity to catch that criminal. से criminal को धरिवार प्रकृष्ट समय होची है. So after a minute he described about 500 meters ahead the outline of a man near the doorway of a darkened hardware store. So few minutes later he saw something, noticed something, and what was that or what was going to happen in the next कौन घटुथिला जे 500 meters away or ahead he saw the outline of a man near the doorway of a darkened hardware store. So he saw a man standing near a hardware store and he started moving with his quick and steps towards the hardware store. जेतेबेले से हार्डवेयर पाखरे थिवा लोकोटी को देखिला पुलिसमैन टी देखिला and who was that policeman? He was Jimmy and he saw someone near the hardware store. hardware store पाखरे से जण को देखिला suspicious way रे and he started moving and quick and his steps तार गति बढ़ेवा को लागिला से पुलिसमैन टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वाज स्टैंडिंग नियर द हार्डवेयर स्टोर जे छिड़ा इतला से हार्डवेयर स्टोर पाखरे. सो द प्लेस वाज स्लाइटली डार्क अंधारुआ थिला लाइंग एक्जाक्टली मिडवे बिटवीन टू लैंप पोस्ट. ए कोठी अवस्थित थिला से जगहटी दुईटा लैंप पोस्ट मझिरे अवस्थित थिला. सो ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट प्लेस. से जगह को जीवा को आरंभ करला. He was about to address the man and he was about to start talking to that person and he was about to address himself as a policeman. से निजको address देवा ପାଇଁ जाउतला से लोक पाकु जे मु होची गोटे policeman and he was about to start his conversation. तांकर कथावार्ता स्टार्ट करी कि जीवा पूर्वरु something it stopped to that policeman not to speak that person. He didn't speak. किछि गोटे लागिला जेहेतु से तांको निज माने निजको निजर परिचय से लोकटी को देले नाही and what happened but changed his mind and allowed the man to begin and he said you start speaking. तमे को कौन कहवा पई चाहू छ बोली कर से कहले but he didn't give his address. से निजको जणैले नाही जे मु गोटे पुलिसमैन बोली करे but से लोक पाक जाय करे ताको कथा बाडा आरंभ कले and the person who was standing before the policeman started speaking. से किछि कहवा को लागिला कौन कहला the man realized that the way he was standing there must look suspicious to one who didn't know his story. जे भी से लोकर स्टोरीटी जानी नथिबो जणे ताको सस्पिशियस भाव रे देखिबो संदेहात्मक चक्षुरे निश्चित भाव रे देखिबो बिकॉज हिज पोस्चर वाज समथिंग लाइक दैट. का कथा कहछि गोटे लोकटा जे सस्पिशियस वे रे ठिया हेतला से हार्डवेयर स्टोर पाखरे आ जा सहित कथा पई से पुलिसमैन टी गले तांकर ना होछि जिमी से पुलिसमैन नगर ना एंड ही मूव्ड टू दैट प्लेस and he started speaking or he started his conversation with that young man बा से लोको पाकर लोको से तो कथा स्टार्ट कले जे से हार्डवेयर स्टोर पाकर छिड़ा आइतला. So the man realized that the way he was standing there must look suspicious to one who didn't know his story. से जानी थिला जे जणे निश्चित भाव संदेह चक्षुरे मते देखिबो. So he said as the policeman walked up to him, it's all right officer, I am just waiting for a friend.
So he started revealing why he was waiting there at the hardware store. Se hardware store पाखरे कौन पाई अपेक्षा करथिला. He explained everything in detail before that policeman. Se policeman सामना रे से प्रकाश कला. It's all right officer. The conversation was started like this. एभली भावरे conversation start ହେଲା and he spoke to that policeman. It's all right officer. It's all right officer. किछि नाही officer. It's fine. से कहला I am just waiting for a friend. मु गोटे सांग को जोगिछि एठी and it is just an appointment made 20 years ago. 20 वर्ष पूर्वे गोटे फिक्स होइथिवा अपॉइंटमेंट होची ये and that is why I am here and I am here to wait a person who is also waiting for me. मोते जे अपेक्षा करछि मु भी ताको अपेक्षा करछि and it was the promise that had done before 20 years by it was done 20 years ago. 20 वर्ष पूर्वे होइथिवा गोटे प्रतिज्ञा जोगु आमे एठी एकत्रित होइछु मु एठी एकत्रित होइछि and I am here to wait someone and he was my friend. मु गोटे सांग को मोर जोगिछि. It sounds little funny to you. Who said it? Say suspicious men पुलिस को कहूँ इट साउंड्स लिटिल फनी टू यू तुमको यहाँ मजाक लगी थाई पारे बट लेट मी एक्सप्लेन मत एक्सप्लेन करने को दियो बोलिक से कहले वेल आई विल एक्सप्लेन सो इट्स टू रिमूव ऑल सस्पिशन फ्रॉम योर माइंड लेट मी रिमूव ऑल द सस्पिशन फ्रॉम योर माइंड मुझे तुम माइंड समस्त प्रकार संदेह दूर कर लेट मी एक्सप्लेन मत एक्सप्लेन करने को दियो सो दैट सस्पिशन मेन और दैट सस्पिशियस मेन सेड टू द पुलिसमैन से कौन कौन से पुलिसमैन को अबाउट 20 years ago they are used to be a restaurant ये 20 वर्ष पूर्व गोटे रेस्टोरेंट रोला where this store stands वर्तमान गोटे से दुकान टी भांगी से रेस्टोरेंट टी भांगी कर आ गोटे दुकान हो जाइए एंड द रेस्टोरेंट वाज नोन एज बर्डीज रेस्टोरेंट थिला होची कार बर्डीज रेस्टोरेंट ना होची बर्डीज रेस्टोरेंट जोठी they had promised each other to meet after 20 years 20 वर्ष पर मिसिबे बा भेटिबे बोली कर से माने कथा देथिले परस्पर को एंड हु सेड इट द सस्पिशियस मैन सेड टू द पुलिसमैन मैन को कहउतला पुलिस को सो अंटिल 5 years ago सेड द ऑफिसर के पुलिस ऑफिसर टी कहउछि से सस्पिशियस मैन को इट वाज turned down then. He was about to take the hand of the stranger but checked himself. So before going to speak something, it was माने यह थिला कौन तांकर conversation and the person के the policeman was about to take the hand of the stranger. से stranger hand हाथोटी को धरिबा को जाउतला but checked himself. निजो को check करला and he stopped himself. निजो को से रखी देला until 5 years ago said the officer कौन कहूँ it was torn down then 5 वर्ष पूर्वे से दुकानटी आउ भांगी जाइथिला बोलिकर से कहूँ it was torn down then he was about to take the hand सेते बेले से नेवा पई जाउतला तांकर हैंड हाथोटी धरिया पई जाउतला सेठी कार से सस्पिशियस मैन रो बट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ के से पुलिसमैन निजो को रखी देला तो नेक्स्ट द मैन इन द डोरवे स्टक अ मैच एंड lit his cigar. The man in the doorway stuck तापर से suspicious man टी कौन कला with the help of the matches box रो help साहाଯ୍य रे he lit his cigar तार cigar टी को जळेला and the policeman had a chance to look at the face of the man and it was the perfect opportunity to see and to recognize that person's face तार face टी देखिवार perfect प्रकृष्ट सुजोग थिला किंतु कौन हैला in the next class we are going to discuss. So there is full of suspense and it will be known whether the policeman was able to catch that criminal or not, and also we will come to know whether that person or that policeman was able to meet with the friend. On the other hand, the suspicious man who was waiting for his friend, whether he met or not, we will discuss in the next class.